Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back again to my channel. In this video, I will teach you how many branches of physics. Firstly, I will tell you the names of branches of physics. First branch of physics is mechanics, then heat, and then sound, and then light, and then electricity and magnetism, atomic physics, nuclear physics, and plasma physics. These all are the branches of physics. ये तमाम जो है branches हैं physics की. Firstly, I will tell you about first two branches of physics, which is about mechanics and heat. What is mechanics? The branch of physics in which we study about motion of object, its causes and effects. Physics की वो branch जिसमें हम motion of objects, that's mean किसी भी चीज़ की हरकत के बारे में, उसकी वजूहात और उसके असरात के बारे में पढ़ते हैं, वो mechanics कहलाती है. And then I will tell you about heat. This is the branch of physics in which we study about nature of heat, modes of transfer and effects of heat. जिसमें हम हीट के असरात के बारे में, उसकी साख्त के बारे में, कि कैसी होती है और किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं. दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज़ कॉल्ड हीट. एंड देन थर्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज़ साउंड. Sound is the branch of physics in which we deal with study of sound waves, their aspects, their production and properties and their applications. जिसमें हम आवाज़ की खसूसियात और उसके असरात, उसकी खसूसियात के साथ साथ उनकी जो एप्लीकेशंस हैं और कैसे पैदा होती है आवाज़, उसके बारे में पढ़ते हैं. वो हमारे पास साउंड कहलाती है. आज के अपने इस लेक्चर में हम इन्हीं थ्री ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे. टेक केयर व्यूवर्स. अल्लाह हाफिज़.